invited special guests, members of management, other guests, lovely parents, worthy teachers, my dear friends, and our loving kids and kins from Manav Kendra Parivar. A pleasant evening to one and all present over here. Reach high for the stars lie hidden in your soul. Dream deep for every dream that leads to the goal. It's time to chill, to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired. Now, our chief guest, Pastor a pleasant evening to one and all present over here. Reach high for the stars lie hidden in your soul. Dream deep for every dream that leads to the goal. It's time to chill, to cheer, to shine, to inspire, and to be inspired. May the excitement of today enthuse you, may its enchantment surround you, and may the fellowship that we share create happy memories, smiling, and magical moments. May the magical moments be many and memorable. We, the Manoites, on behalf of the school management, principal, staff, and students, full of engaging elation and soulful musical rendition, welcome you all to this fiesta of floral flow of musical feelings and glow of gorgeous dealings here at MKGM School on our 35th annual day. We are extremely privileged to have you with us today to share our joy and delightful moments of the day and to be part of what we are. Wishing you all a happy and memorable evening. Here, I, Khushi Patel, along with my co-anchors, stand before you to share my views. A true artist is not one who is inspired, but one who inspires others. Amidst us, we have such an inspiring personality, Miss Yesha Rugani, a renowned actress. Miss Yesha Rugani is an Indian TV actress and fashion stylist in profession. She was born and brought up at Rajkot, Gujarat. She completed her education from S.N. Kansakra School, Rajkot, and graduated in fashion communication from Symbiosis Institute of Design, Pune. Before pursuing her career in acting, she worked as a stylist for Priyanka Chopra, Yasha Gupta, Malaika Arora, and among others, starring as a titular character in Star Bharat's Muskan. Miss Yesha Rugani is known for portraying Devi or Devika in Jeet Gayi To Piya More in her debut role and Zara in Hero Gayab Mud On. Recently, she starred as the female lead in Kabhi Kabhi Ittefaq Se as Ridhima Gungun Bhatnagar. Known for her ability to effortlessly embody a diverse array of characters, Miss Yesha brings a rare authenticity and depth in each role she undertakes, whether commanding the screen with powerful dramatic performances or electing laughter through her impeccable comedic timing. Ma'am, we are very fortunate to have you with us this evening as a chief guest. We extend an affable welcome to you, dear ma'am. Now, I would like to humbly request our respected Principal, Ms. Shri Mahendra Siviol, to honor our chief guest, Ms. Yesha Rugani ma'am, by offering a bouquet. Excuse me, sir. Thank you very much, ma'am and sir. I heartily welcome our guest of honor,
Shriyan Rama Mohan, who is a mechanical engineering graduate. He is also a graduate in nuclear science and engineering. After completing his graduation, he joined the Nuclear Power Corporation of India Limited, Government of India. In the year 2006, Sri Rama Mohan and his team were awarded with Group Achievement Award for commissioning 540 megawatt fueling machine in a record period of time. In the year 2007, he was conferred with Excellent Award for designing, engineering, manufacture, assembly and acceptance testing of refueling equipment. In the year 2008, he was awarded with INS Gold Medal and felicitated by Dr. Anil Kakotkar, the Secretary of DAE, Government of India. In 2015, he was conferred with Group Achievement Award for his contribution in the indigenous development of several precious components for KKNPP under the Make in India policy. In 2017, he was promoted to Outstanding Scientist and has held positions as the Associate Director and the Executive Director. He is also serving as a member of various high-level DAE committees. He has authored many technical papers and presented them at both national and international seminars. In the year 2022, he was elected as a Fellow of Indian National Academy of Engineering. We are really enthralled to have Sir among us for our guest of honor. I now humbly request our trustee, Shri Mahendra Bhai Sharma, to honor our guest of honor, Shri N. Rama Mohan, by offering a bouquet. Thank you very much, sir. On this great evening with merging of minds, we welcome you, dear Shri Bhupendra Narayan Singh, as our guest of honor. Shri Bhupendra Narayan Singh is presently serving with Indian Overseas Bank as a Chief Regional Manager of Vadodara region. He is in charge of 46 branches of the bank in the Vadodara region, which spans from Silvas to Nadiad. He has also served as a technical crew in MiG-21 Squadron with Indian Air Force for 10 years and passed out as a mechanical engineer. He is an MBA in banking and finance. He has also possessed CIB certification. In July 2000, he joined Indian Overseas Bank as a probationary officer, and he has been continuing with the IOB in various capacities. I now humbly request our Vice Chairperson, Sri Jayendra Bhai Sharma, to honor our guest of honor by offering a bouquet. Thank you very much, sir. Excuse me, sir. Our special guest for tonight is Shri Bhaskar Pandit. Bhaskar Pandit is an alumnus of Delhi College for Engineering. After successful completion of BARC Training School in 1948, he firstly joined Nuclear Power Board and NPCIL at present. In his more than 40 years of career as a specialist in mechanical design, engineering and procurement, he contributed in all nuclear power reactors in India. He is specialist for nuclear equipment such as steam generators, heavy water heat exchangers, pressurizers, etc. He was a part of team which carried our first of its kind to India. The design basis review and comparatively studies for TAPS, first and second design analysis prepared 6 important reports for the life extension. He is also a specialist in front end of fuel cycle and contributed in studies of proposal for all the major international uranium suppliers, negotiation and finalized for contracts with Russia, Kazakhstan, Uzbekistan and Canada. He compiled a detailed training manual for uranium front-end engineers to provide a comprehensive orientation about the uranium.
He has been taking care of critical interest of NPCIL as well as DAE in providing technical support to various court cases concerning KK, NPP and other NPPs in high courts and honorable Supreme Courts since 2011. He is immensely contributed as a course developer, course coordinator and faculty for training programs conducted for special officials from Bangladesh. Sir, we welcome you and wish a splendid time with us. Now, I would like to humbly request our trustee, Shri Amit Bhai Modi, to honor our special guest, Shri Bhaskar Pandit, by offering a bouquet. Thank you very much, sirs. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a barren field frozen with snow. Hold fast to dreams, for when dreams go, life is a broken phrase frozen with snow. Ceaseless flow of thanks turn into deluge, which I know I cannot put them in words. Thanks of the level of immense propensity to all the luminaries amongst us once again, and also to all the parents, guardians, guests, and tons of untiring efforts of endless number of students and teachers. Once again, we welcome you all. Welcome, welcome, welcome. Light symbolizes brightness and prosperity. It removes the darkness and gives us positivity. In spiritual words, light means life. So with this noble thought, let us start this evening by lighting the lamp at the altar of Goddess Saraswati. I request all the dignitaries to light the lamp. May the divine power bless us all. Sirs and ma'am, please. He was the patron and the mentor of the school. He was a philanthropist, dedicated, hard-working and a far-sighted individual. He shall always be a guiding force for everyone who shall come with contact with him. Thank you all. I request all the respected dignitaries to occupy their respective seats. Thank you, sirs and ma'ams. जी हाँ साथियों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है एक भारत
श्रेष्ठ भारत। Bharat, our dear motherland, is one of the oldest civilizations in the world and yet one of the youngest nations. The entire globe is bestowed with the honor of witnessing how we as Bharatiyas balance modernity with tradition, how we nurture science and yet protect our mother nature, how we narrate millions of stories on big screens on Indian cinema, how we enjoy varieties of languages, foods and spices. Our Bharat is a unique nation whose fabrics have been woven by diverse cultural, religious strands, teaching the world the concept of Vasudhaiv Kutumbakam, underscoring the universal truth that the whole world is one family. Dear audience, you are now going to witness an enthralling journey of Ek Bharat, Shresth Bharat. उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशेव दक्षिणं वर्षं तदं भारतं नाम भारती यत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उस देश का नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय है। वंदे नितराम भारत वसुधाम दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। देवभूमि, हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा और कई नदियों के साथ चमकने वाली भारत की भूमि को मैं नमन करती हूँ। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। अपनी जन्मभूमि और माता के विषय में श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, मुझे यह सोने की लंका अब भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जन्मदात्री माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होते हैं। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धान्यास्तु ये भूमि बागे स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भूते भवन्ति भूय पुरुषाः सुरत्वात्। देवता गीत गाते हैं कि स्वर्ग और अपवर्ग की मार्गभूत भारत भूमि में जन्मे लोग देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य है, अर्थात मोक्ष केवल्य की मार्ग स्वरूप भारत भूमि को धन्य धन्य कहते हुए देवगण भी इसका शौर्य गान गाते हैं। ओम भद्र मिछंत ऋषिये स्वर विदस्तपो दीक्षा मुपिने शेदुरागे ततो राष्ट्र में बल मुजश्च जातम तत्समय देवा उपशत्र मंतु। प्रकाश के ज्ञान वाले ऋषियों ने सृष्टि के आरंभ में लोक कल्याण की इच्छा से तप किया, उससे राष्ट्रबल और ओज की उत्पत्ति हुई। इस तप और दीक्षा से उत्पन्न होने वाले ओज वाले राष्ट्र की हमारे प्रबुद्ध जन इस राष्ट्र देवता की उपासना करें। तो चलिए सुनते हैं इन विद्यार्थियों की जुबानी श्रेष्ठ भारत की कुछ खूबियां। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंग है, जहाँ सालों पहले नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जो दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालय थे, जहाँ 10,000 से भी अधिक छात्र अध्ययन करते थे और 60 से भी अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है, जो 7 समुंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है,
जब आधुनिक मेडिकल साइंस का आविष्कार नहीं हुआ था तब मेरे देश ने विश्व को आयुर्वेद दिया था, जहाँ चरक संहिता जैसे ग्रंथ हमारे ऋषि मुनियों ने ही दिए थे। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को कर्मयोग और हितोपदेश सिखाया है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर जिया है मेरा भारत। यह भूमि है नीलकंठ की, जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान दिया है। कर्मण्यवादी का रस्ते गाने वाला स्वामी भी माखन चुराता है। महा अवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ, जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं भगवान राम के भारत से आता हूँ, जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को वेद और उपनिषद दिए हैं। हम भीमसेन का स्वर है, बिस्मिल्लाह की शहनाई है। हम शिवाजी महाराज की तलवारें हैं, तात्या तोपे के नाती है। हम लक्ष्मीबाई सा साहस है, मीरा की भक्ति है। हम अब्दुल कलाम की दृष्टि है, सुनीता विलियम की छवि है। हम टाटा बिरला की पूंजी, लक्ष्मी मित्तल अंबानी है। हम सब सवार मिलके जन गण मन गाते वानी है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ स्त्रियों को स्वाभिमान से पहचाना जाता है, जहाँ सती अनसुया ब्रह्मा विष्णु और महेश की भी बन जाती माता है। मैं उस भारत से आती हूँ जहाँ सती सावित्री के आगे यमराज भी शीश झुकाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत अहिंसा का जन्म स्थान है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे स्कूल के मंच पर अब श्रेष्ठता के रंग से रंग जाने वाले हैं। दोस्तों, जीवन के अनेकों रंग है और इन रंगों में रंग कर भी हम एक दूसरे के संग है। हमारी संस्कृति दुनिया में अपना सर्वोच्च स्थान बनाए हुए है, तभी तो श्रेष्ठ है हमारा भारत। तो हम एक है, श्रेष्ठ है। हमारी इसी श्रेष्ठ संस्कृति के लक्षणों में से पहला लक्षण है कि किसी भी मंगल कार्य के प्रारंभ में गौरी नंदन का आना और सारा कार्यभार संभालना। वही गणपति गजानन आज हमारे इस मंच पर पधारे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें गौरी नंदन का। प्रस्तुत है श्री गणेश वंदना। गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके बाळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती श्री मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती।
तू मल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया, लंबोदर तू विनायका तू मल्लोळेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया, भक्ततुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका. वाह, बहुत खूब, सुंदर प्रस्तुति. करते हुए शोलों का दीदार जाओगे, लेकर अपनी आंखों में सपने हजार. बजा दो तालियां दोस्तों, वरना कैसे तुम हम बच्चों का प्यार पाओगे. भारत परंपराओं और संस्कारों का देश है. यहाँ की परंपरा पर अगर आप गौर फरमाएं तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई मौलिक कारण अवश्य होता है, जो हमारी सेहत और स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है. इसी खास श्रेणी में आता है नन्हे कदमों की श्रद्धा और शालीनता, निश्चलता भरा लाड़ और लज्जा से सुसज्जित पायल की खनक. यही तो है हमारे श्रेष्ठ भारत की झलक. MKGM के नर्सरी और KG के नन्हे मुन्नों के चंचल कदमों से आज MKGM का मंच गूंज उठेगा. दोस्तों, ये आपको बताने जा रहे हैं हमारी संस्कृति का अनूठा संगम. So let's groove on the beats of our popular track जहाँ पाँव में पायल. This happy number celebrates unique culture, tradition and unity of our incredible nation, which is possible only in India. So, without any further delay, let's welcome the young birds of nursery and KG1 to mesmerize us with a song, It Happens Only in India. जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, कंगन, जा पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. जा पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया. It happens only in India. It happens only in India. जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए, और अश्कों से अपने लिख कर भेजे प्यार की चिट्ठियां.
झूले, कहीं पे बैसाखी के मेले। लगता है खुद कुदरत इस धरती पे आकर खेले। जहाँ माँ से लोरी सुने बिना बच्चों को ना आए निंदिया। Wow, it was really nostalgic. The performance by the Tiny Tots really filled our heart with joy and love. Please give them a big round of applause. Before we welcome our adorable Tiny Tots from KG2, let's take a moment to appreciate the beauty and diversity that our incredible nation India holds. Absolutely, Doleshwar Bhaiya. India is a land of traditions, colors and unity in diversity. Our nation is like a tapestry woven with countless threads of cultures, languages and traditions. And let's not forget the resilience and strength that defines our great nation. In the words of Gurudev Rabindranath Tagore, where the mind is without fear and the head is held high. Well said, my friend. Our national flag not only just bears the tricolors, it also carries the spirit of every Indian, striving for progress and unity. Now let's make a movement to express our love and pride for our Mother Nature with the soul-stirring I Love My India, which beautifully captures the essence of our diverse land from majestic Himalayas to the serene backwaters of Kerala. And speaking of unity, our Tiny Tots from KG2 are all set to showcase their love for India through the sweetest performance on the song I Love My India. So without any further delay, let's welcome the Tiny Tots from KG2 to present I Love My India. लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India।
ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India. ये मेरा इंडिया, I love my India. वतन मेरा इंडिया, सदन मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया, धर्म मेरा इंडिया। What a heartwarming performance by our little stars. Let's applaud their love for India. Absolutely charming. These tiny tots from KG second have truly captured the essence of our nation's spirit. You are fantastic. And to our audience, stay in your seats as more delightful performances await you. Do you know, my friend, India is the one of the oldest civilizations in the world, spanning a period of more than 5,000 years and witnessing the fusion of several customs and traditions, which are rich culture and heritage of the country. Yes, the history of nation that gives the glimpse into the magnanimity of its evolution from a country reeling under colonialism to one of the leading economies in the global scenario within a span of 70 years. More than anything, the nationalistic fervor of the people is the contributing force behind the culmination of such a development. This transformation of nation instills a sense of national pride in the heart of every Indian within the country and abroad. Aryabhatta, the noted mathematician, invented the zero sign and it opened the new vista in numerical field. सभ्यता के प्रारंभ से अब तक हमारे भारत ने पूरे विश्व को लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखा है, तभी तो यह प्रथम संस्कृत ज्ञाता भारत एक है। जी हाँ अभिभावकों, जीरो को भी हमने ही खोज कर दुनिया को दिया है। यह जीरो से हीरो तक का सफर करने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत है। अभिभावकों, हमारे बच्चे को यह ज्ञात होना चाहिए कि हम जीरो से चलकर आज हीरो कैसे बने। तो आइए पहली कक्षा के नन्हे कलाकार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं जब जीरो दिया मेरे भारत ने। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आता हमें है देखना, विश्वविद्यालय तक्षशिला
विश्व को पहला मिला शल्य सुश्रुत प्रदान है, दुनिया के लिए वरदान है। जग को हमने ही सिखाया वसुधैव कुटुंबकम, आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाने लगे, हम विदेशी भगाने लगे। खोजों का है ये सिलसिला, जो चांद पे पानी मिला। यूएसबी भी हमने दिया, मत पूछो क्या क्या किया। हर गोविंद पे है नाज हमें, दिया डीएनए का राज हमें। देश की स्वदेश की है खोज पेंटियम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम, हमसे बेहतर हम, बोलो वंदे मातरम। A big round of applause for the marvelous dance. The performance really painted everyone and made us realize the importance of zero. My friend, are you expecting hockey as my answer? But there is no national sport of India. In fact, we give importance to each and every sport. Very true, my friend. India is now emerging in every sports, whether it is kabaddi, wrestling, volleyball, badminton, javelin throw, and of course cricket and football. Starting from 1928, Indian hockey squad won the gold medals in Olympics for 8 consecutive times. That golden era of Indian hockey has again returned. In cricket too, our Indian team is a power to reckon with. Neeraj Chopra, PV Sindhu, Mary Kom, Vishwanathan Anand, and many more have brightened the sports firmament of the country in their respective areas. Yes, Heath, I also want to add that in this 2023 Summer Olympics, India has got the highest gold medals ever in those sports. चलो आज हम देखेंगे कैसे हमारे देश के छोटे सितारे ग्रेट सेकंड एक स्पोर्ट्स डांस के जरिए दिखाएंगे where every move narrates a tale of unity echoing to the rhythm of sports. आज यहाँ हर कदम एक कहानी के साथ चल रहा है. So without any further delay, चलिए देखते हैं हमारे छोटे सितारों का जादू. So far, let's see how our country shown talent in sports, from India dominating the whole cricket world, proving that we are the true champions, to our athletes raising tricolor high at the Olympics. Now, let's dive into the vibrant world of our young talents. Class 2nd is all set to dazzle us with a sports-themed dance, perfectly in synchronization with the theme, Ek Bharat, Shresth Bharat. Let's turn from there to happier news. And what happier news than the fact that in these COVID times, the world's biggest sporting event, the Olympics, will begin tomorrow in Tokyo. क्या लगता है तुम्हें? इस बार इंडिया कोई मेडल जीत पाएगा? मालूम नहीं यार. Let's hope for the best. यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है. यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है. तुझे अब ये दिखाना है. रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य था हर हाल में पाना है. The Olympic Games have finally begun. 11,500 athletes have reached Tokyo. पूरा भर ले
चढ़ाने हिचकियों में क्या है मरना पूरा मर ओलंपिक के पहले दिन ही इंडिया को मिली बड़ी कामयाबी। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान को दिलाई चांदी। This is yet another bronze coming for India after PV Sindhu and Lavlina Borgohain. The men's hockey team are on the podium. Bajrang Punia has won India another bronze medal. आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है बहुत ही बड़ी खबर, गोल्ड मेडल जीत लिया है नीरज चोपड़ा ने। जेवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। And our next performance is a tribute to all the participants from Tokyo Olympics 2020 who worked hard, competed and made India proud. अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा And to our dear audience, stay with us as we have more exciting performances and surprises lined up. Celebration को आगे बढ़ाते हैं. Rashi, which festival do you like most? I like Diwali, the festival of light. And you, Kushi? I like Holi, the festival of colors. India, our pride nation, is nation of festival. Without celebration, life is a blank canvas. Celebrating festival is one of the ways to bring colors to life. Festivals spreads brotherhood and faith among all the humans. People at festival are connected with God and ethos. Yes, during this festival, connection with God creates a positive attitude in our behavior
attitude towards other people, and positive perspective towards everyone, irrespective of caste, religion, color, and occupation. It spreads brotherhood, love, and faith in the society. That's why it's important to celebrate festivals. Festivals are oxygen and life of our Bharat. Festivals are chance for people to work and connect for cause. That's why it spreads brotherhood, faith, love, sense of respect and duty among us. As we celebrate the diversity of our nation, let's pay homage to our unity with a melody of folk song representing our unique culture and tradition. Dear audience, we will take you on a musical journey across India. So let's now welcome the students of class 3rd to celebrate some important festival and paint the stage with colors of festivity. ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे रे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए। अरे जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे दे रे भैया। तेज 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 है मांझा अपना तेज है, तेज 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 है मांझा अपना तेज है। उंगली कट सकती है बापू हो, उंगली कट सकती है बापू, तो पतंग क्या चीज है रे। ढील दे दे रे भैया, ढील दे दे भैया, उस पतंग को ढील दे जैसे ही मस्ती में आए, जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच दे, ढील दे दे भैया। भंग बजा के चंग, भंग 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 पी लो भंग बजा के चंग। होलिया में उड़ा रे गुलाल, उड़े रे गुलाल, कईयों ने मांगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कईयों ने मांगे तर से। मारिए मंगेतर नचनी वाली, मारिए मंगेतर, मारिए मंगेतर नचनी वाली। ऊंचा वाले रे नवाब, कईयों ने मांगे तर से। ऊंचा वाले रे नवाब, कईयों ने मांगे तर से। होलिया में उड़ा रे गुलाल, कईयों ने मांगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कईयों ने मांगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कईयों ने मांगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कईयों ने मांगे तर से। होलिया में उड़े रे गुलाल, कईयों ने मांगे तर से। तुझ्या घरात नाही पाणी, घागर उतानी रे गोपाळा। तुझ्या घरात नाही पाणी, घागर उतानी रे गोपाळा। घरात नाही पाणी, घागर उतानी रे गोपाळा। अरे गोविंदा रे गोपाळा, गोविंदा रे गोपाळा। यशोदेच्या तान्या बाळा, यशोदेच्या तान्या बाळा। हर तरफ है ये शोर,
हम लोग मस्ती करेगा, कहीं मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, मटकी तोड़े कहीं नैना जोड़े, आज गड़बड़ घोटाला चलेगा। तगड़ू मामा पेटी वाजो, मामा पेटी वाजो, दोन को मैं दे नहीं तो पतन छोड़ो। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूर की नभाते हो, बस मुलाकातें हो, सबको यही देते संदेशा। दीपावली साथ श्री जुगात में समाप्त Life is a festival if you want it to be. Wow, that was so colorful, so beautiful, and so mesmerizing. Just like a wow. That was really a splendid performance. You know why we have chosen Ek Bharat Shresth Bharat as the theme of the evening? To highlight the achievements of our Bharat. Yes, but what are the achievements? My friend, Bharat has been well known for its diverse cultures. From Kashmir to Kanyakumari, Arunachal Pradesh to Gujarat, we follow different traditions, food, practice different languages and whatnot. But still, my friend, we all are Indians first. हम सब भारतीय हैं. It means we can consider our India as Ek Bharat and the best one as our theme is representing. So let's continue our musical journey with the patriotic anthem Ek Bharat Shresth Bharat, which promotes the idea of united India, where every state contributes to the rich accumulation of our nation. So now let's welcome the students of class 4 to present an eye-opening dance act on this stage. शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर, गाँव गाँव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर, गाँव गाँव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर, गाँव गाँव शहर शहर चली रे बढ़ी रे एक लहर। बूंदे अनेक कहे सागर है, किरणें अनेक कहे सूरज है, धड़कन अनेक कहे दिल है, बोली अनेक कहे मकसद है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सुंदर 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 सुंदर। कल करना है आज करो, आज करना है अब करो, जोश में है हम, होश में है हम, तेरे ज़मीन पर लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक और एक बन 100 करोड़, जीतेंगे दौड़ आसमां की ओर, जुड़ेंगे हम, जोड़ेंगे हम, लहराएगा अपना परचम। हम है एक है हम, 9 पुरुष के 9 पुत्र हैं हम है एक है हम। सबका अपना एक भारत, सबका सपना श्रेष्ठ भारत, सबका मान एक भारत, सबका अभिमान श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत,
श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। वंदे मातरम 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 वंदे एक भारत श्रेष्ठ भारत। You all have understood how our country was, is, and will always remain Shresth and popular for its contribution. That was really an educative performance. Parents, please the students really deserve a big round of applause. दादा न हो तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या करेंगे? हम कैसे ये उत्सव मनाएंगे? अरे क्या हुआ जानवी? मैं सोच रही हूँ अनय कि हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता कौन पूरी करता है? हाँ हाँ बताओ कौन है वह, और हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता तो भोजन है, और हमारी इसी आवश्यकता को अन्नदाता यानी कि हमारा किसान पूरी करता है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही है तुम्हारी बात। किंतु तुम इस बात से चिंतित क्यों हो? हमारा तो देश ही कृषि प्रधान है, जहाँ खेतों की लहराती फसलें हमारी पहचान है, जो कि पूरे देश में अन्न की आवश्यकता को पूरी कर विदेशों में भी इस आवश्यकता को पूरी करता है। हमारे देश में रचना की दृष्टि से भी सभी ग्रामीण समुदायों में अधिक मात्रा में कृषि कार्य होता है। हमारा देश विश्व को चावल, चीनी, मसालों तथा कपास का निर्यात भी करता है। यहाँ तक कि कोरोना महामारी जैसी आपत्ति के दौरान भी हमारे देश ने विश्व के कई अनेक देशों को मदद पहुँचाई थी। यहाँ पर कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग 20% है और 40% जनसंख्या इससे जुड़ी है। और क्या आप जानती है कि हमारे अधिकतर अभिभावक भी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं? यही किसान हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं। सही कहा तुमने अनय। तो क्यों ना इस श्रेष्ठ भारत की एक झलक यहाँ देखी जाए? जी हाँ जानवी, हमारे विद्यालय के 5वीं कक्षा के विद्यार्थी आपको हमारे श्रेष्ठ भारत की खूबी बताने जा रहे हैं, जो कृषि प्रधान देश है। तो चलिए दर्शन करें कृषि प्रधान देश का। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ला सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हो मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना। जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना, यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। One tree can start a forest. One word can frame a goal. One candle can wipe out darkness. A true leader has the confidence to stand alone. I do agree with your opinion. The quote you said is very much apt to our principal, Shri Mahendra C. Vihol. You show motherly love and give fatherly advice. Your endless care, guidance and support prove that you are a true leader.
We are really blessed to have a principal like you, sir. Now, I would like to call upon our respected principal, Mr. Mahendra C. Vihol, to present the preamble of school's achievements, the school's annual report. Hello. Good evening and namaste. Esteemed chief guest of the day, Miss Yesha Rugani. Guest of honor, Shri N. Rama Mohan, Shri Bhupendra Narayan Singh. Special guest, Shri Bhaskar Pandit ji. Members of the management, invited dignitaries, Ishika Tithe ma'am, first pro MMA fighter from Gujarat, Conor Williams sir, former opening batsman Indian cricket team, Hardik Bhai Vaishnav, Magistrate Karjan, SDM Karjan Shri Ashish Miyatra ji, principals of various schools, parents, friends, media, my dear staff members and lovely students. It gives me great pleasure to welcome you all to the annual day celebration of our school. A heart filled with inspiration is all that we know since the very inception of MKGM, and that gave us the ambition of marching forward till excellence is achieved in all our endeavors. The annual report of our school is comprised of the achievements and excellence made during the year gone by, and at the same time set the path for greater accomplishment in the year to come. Keeping the legacy alive, we at MKGM have always stepped forward and come up with distinctive propositions for overall development of our students. One of the happiest tidings of the year 2023 is that our school has been ranked first in Vadodara district and 5th best boarding cum day boarding school in Gujarat state in a survey conducted by Education World. We have been receiving this prestigious award since many years now. Our school was honored with Excellence Conclave Award 2023 by Ek Updesh Media for our committed efforts and innovative approach in field of education. Diamonds are just pieces of coal that did well under pressure, and our students are no less than diamonds. Last year, we have 100% pass out results. I am happy to place on record that school continues to be harbinger in imparting quality education. Our school result stands testimony to the hard work put in by both students and teachers. At senior secondary level in commerce stream, Master Ritesh Kumawat topped the school with 92% marks, whereas Master Jal Patel secured 90% marks and stood second. Master Het Patel secured 89% marks and stood third. In science stream, Master Aditya Yadav stood first with 90%. Miss Priyanshi Rathod secured 90% and stood second. Master Om J. Patel secured third position with 88%. In class 10th, Master Aviraj C. Raulji scored 95% marks and topped the class. Miss Jill A. Shah and Master Heer R. Patel got 92% each and stood second, whereas Master Joy B. Patel secured 89% and stood third. In prestigious recognition of academic excellence, Master Aviraj C. Rawalji scored 100 out of 100 marks in science. We are successfully conducting Olympiad and other competitive exams for our students. This year, 4 students, Arya K. Patel, Vyom Varya, Jahanvi Bedi and Manav N. Patel were selected for Veer Gatha project organized by Ministry of Defence in collaboration with Ministry of Education. Our students, Mokshit Rao from class 10th, Sumit Yadav from class 9th and Ajay Rathwa from class 10th were selected for national level in Aryabhatta Ganit Challenge organized by CBSE. Professional development of our teachers plays a very important role in our school. Our faculty members are updated with the latest development in the sphere of education, especially new education policy and competency-based learning to enrich their skills and enhance their contribution to success of our students. Almost all the teachers attended workshops and seminars on various topics organized by CBSE, Hubs of Learning, as well as Sahodaya Complex throughout the year.
In order to accomplish the aim of multidimensional and versatile development of young students and teachers, many co-curricular activities like intra-class essay writing competitions, open drawing competition, intra-class handwriting competition, inter-house debate competition, inter-house GK quiz competition, intra-class elocution, science and commerce quiz, library weeks, etc. are being organized throughout the year. To build social skills by interacting with others and learning how to communicate effectively, different days are celebrated in kindergarten throughout the year. Our school participated in CBSE regional level science exhibition held at Atmiya Vidya Mandir, Vadodara. Our school team comprising 8 members participated in Tech Fest organized by Sant Kabir School, Vadodara, where Master Gopesh and Shiv Patel secured first rank in Python coding. Ms. Tejasvi Thakur of class 12th won first position in inter-school debate competition organized by Brahma Kumari's Meditation Center, Karjan. In order to reduce the stress and anxiety, improving mental and emotional well-being of the students as well as teachers, a Reiki session was held where we had delegates from Japan. We at MKGM firmly believe in nurturing Indian values in our students. To honor the unity and diversity of our country, we celebrated all important days like Teachers' Day, Earth Day, Anti-Narcotics Day, Doctors' Day, Freshers' Day, Gandhi Jayanti, World AIDS Day, International Yoga Day, Christmas celebration, Mathematics Day, Janmashtami, etc. in the school. Like every year, this year also we welcome our Maharajji, Shri Sant Sudamaji, and benefited by his satsang. 11th Acharya of Jain Svetambar Terapanthi Margi, His Holiness Shri Mahashramanji, with his 100 followers, stayed in our school for a night while on his way to Mumbai, and all the staff members and students were blessed by his motivational and inspirational words. In order to know the local history, our students visited Choranda railway station to commemorate the contribution of Ambalal Gandhi and Rasikh Bhai Azad during the freedom struggle of 1942 and got an opportunity to listen to veteran Hirubhai Gandhi. Providing preventive and curative health care to the student is prime concern of our school, for which we had health and dental checkup by the team of Dwenj Hospital, Por, for primary section. Trees are very important part of every community and environment. It is our responsibility to take care of our environment. A tree plantation program was organized for seniors as well as juniors, whereby we planted 25 trees in our school campus. In order to generate mass awareness among the students about fire safety and precautions during disaster, a team of Karjan Nagar Palika with their fire officers trained our students and staff about fire risk, fire prevention, and evacuation plans. We also organize awareness programs like human rights awareness, safety and precautions during disasters, AIDS awareness, bad touch, good touch, importance of cleanliness, etc. In order to learn more about science and technology as well as to explore the real-world challenges, students prepared science models for science exhibitions held in the school. In order to understand the achievements of science through working models, live panels and static displays, our students visited Vikram Sarabhai Space Center, ISRO, Ahmedabad. To inculcate the leadership qualities among the students, new prefect council was formed and appointed in the august presence of Deputy Collector SDM Sir Sri Ashish Miyatra ji. Our school has an energetic, pulsating, rhythmic and vibrant band which is participated in mega events like Kala Mahakumbh and 15th August celebration as well as inter-school band competition. Like every year, this time also we were number 1 in Central Zone and participated in state level at Shahibagh Police Headquarters, Ahmedabad. Even
They welcome the dignitaries whenever Vadodara city hosts any mega event. Recently, they were the part of the inaugural function of SGFI Under-17 Badminton National, where they were appreciated by our Member of Parliament Ranjan Ben Bhatt and Mayor Shri Keyurbai Rokadia. Not only academics, but sports are also given utmost importance at MKGM. Our school provides ample facilities and infrastructure for sports and games by specialized coaches. We started rifle shooting 3 years back, but this year have risen by leaps and bounds in it, and it carved out a niche for yourself with wonderful achievements. Our school team participated in various competitions throughout the year and brought laurels for the school. Our students participated in Gujarat State Championship, West Zone Championship, All India Inter-School National Competition, SGFI Tournament, and 66 National Championship. In short, in a year, they won 10 gold medals, 11 silver medals, and 7 bronze medals. We are proud of our shooting team comprising of Dhriti Yogeshbhai Patel, Vaishnavi Rabari, Jahanvi Bedi, Tirth Amin, Naitik Bhatt, Dvija Kalal, Prathna Parmar, and Juguk Shabut. Dhriti Yogeshbhai Patel has been awarded and recognized by a certificate of International Shooting Sports Federation. Many congratulations to all of you and their coach Krishnaba Parmar. Our school athletic team participated in CBSE Cluster 13 held at Lakshmi International School, Vapi. They won 3 gold medals and 3 silver medals. 3 students, Aditya Dikshit, Dhruvraj Gohil, Vivek Patel, were selected for nationals, and they participated at NH Gohil School, Chhattisgarh. Our school judo team participated in CBSE West Zone at Sri Ganganagar, Rajasthan. In under 11 category, Vani Patel won gold medal and participated at national in Noida. In under 19 category, Nilesh Patel won bronze medal. Our school team participated in CBSE Cluster 13 Kabaddi tournament at RP Bhavani Vidya Mandir, Surat, and stood runners-up with silver medals. They were selected for nationals and participated in SS International School, Karnal, Haryana. Our school football team participated in CBSE Cluster West Zone tournament held at American School, Vadodara, and they won bronze medal over there. Our school chess team participated in CBSE West Zone tournament held at Atmiya Vidya Niketan, Ahmedabad. Master Anay Baiti won board prize in that. If I talk about cricket, Manav Patel got selected for Baroda Cricket Association practice. Bhavya Piyush Patel played under 16 Vijay Hazare selection tournament organized by BCA. Pratham Pandya, Dhruvil Bharwad, Megh Panchal, and Jenny Shrabari played under 14 Sri DK Gayakwa tournament organized by BCA. Rehan Patel, Manav Pandya, Yaksh Patel will play under 12 tournament organized by BCA in coming days. In school basketball team, our team participated in CBSE cluster held at GPS Chhani. Our school team participated in lawn tennis at Indore Public School, Indore, MP. I am proud to announce that we had inter-house competitions for shooting, football, basketball, badminton, cricket, kho-kho, horse riding, yoga, athletics, tennis, kabaddi, malkham, rope malkham, and swimming. Even during summer vacation, Karjan Taluka level summer camp was organized for 1 week in collaboration with Sports Authority of India, where about 300 students of our school as well as neighboring schools participated, and they were trained in swimming, kabaddi, badminton, and basketball. In order to support the society, we also hosted T20 tournament for physically challenged cricketers of 6 states in collaboration with Imran Sheikh, former captain of Indian Deaf cricket team, which won Deaf Cricket World Cup 2005. Being a convener of Vadodara Rural, we successfully hosted Taluka level as well as district level Khel Mahakumbh, Kala Mahakumbh, District Mahakumbh, and Yuva Mahotsav. In order to boost up the sports capacity and sports spirit among the students,
our school has purchased 2 young horses, namely Red Bull and Starlight. Further, 4 more ponies were included in the squad, which took the total number of 11 horses. The badminton hall has been extended to house 2 more badminton courts or kabaddi courts as the need may be. Ground floor of new Padmavati hostel has been completed and inaugurated for class 12 students. Constructions for first floor has been started, which shall be commissioned in the coming academic year with the capacity of 40 more students. We firmly believe that positive communication between parents and teacher goes a long way in improving quality of education. The parents-teachers meetings are organized from time to time to discuss the progress of their wards and positive suggestions for the overall development of the school. From the core of my heart, I thank all the esteemed guests, ladies and gentlemen, my ex-students, and my invited guests and principals for accepting our invitation and for being with us till the end of the program with your gracious presence. Before I conclude, I would like to express my deep and sincere gratitude to my fatherly figure, Shri late V.P. Sharma ji. Though he is no longer present with us, but he continuously motivates and guides us even today. I am grateful to the management for their unshakable and resolute trust in me and team of my teachers. I thank all the parents for their support and faith in us and their valuable inputs which help us to come out with best practices desired to serve the society. I assure you that on behalf of the school management and with my team of teachers, we will continue our quality education. I am also thankful to Vice Principal Shri Akhileshwarji Upadhyay, coordinators Srimati Gomti Pandey, Mr. Manoj Kumar Gogoi, Manager Mr. Raju Jangid, Campus Manager Mr. S.M. Pandey, and the team of dedicated and committed teachers and administrative staff members. I acknowledge the work of kitchen staff, security staff, peons, and all their teams, which is ready round the clock with all their assistance whenever needed. I appreciate the work of our head boy, head girl, house prefects, and all the PETs for maintaining discipline throughout the year. I am also grateful to my friends, media, state government, civil administration, electricity board, police, education department, Sarpanch Sri Kandari Gram Panchayat, and Kandari people for their help and support. With this, I conclude the report, and I hope that you will carry back beautiful memories of your school and annual day program prepared by the students. Thank you very much, all of you. Thank you very much, sir. That was indeed motivating and extremely informative. We are so honored and privileged to have you. ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। अरे ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कभी मस्ती भरा गाना, कभी देशभक्ति तो कभी भक्ति गीत। हाँ राशि, यह है आनंद से परमानंद तक पहुँचने का रास्ता। वो कैसे? राशि, हमारा भारत सिद्धांतों पर जिया है, जहाँ जीवन का उद्देश्य आनंद से परमानंद तक पहुँचना होता है, और हमारा भारत विश्व में संगीत तथा वाद्यों में भी श्रेष्ठ है। वैदिक युग से ही यहाँ वेद मंत्रों का उच्चार संगीत के माध्यम से किया जाता है, जिससे रीझ कर देवता भी दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, संगीत एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रभाव चर अचर अर्थात देव, प्रकृति, मनुष्य तथा यहाँ तक कि जानवरों पर भी इसका प्रभाव होता है। आपने सुना ही होगा कि बेजू बावरा जब अपने संगीत की धुन छेड़ते थे तो हिरन भी खींचे चले आते थे। ऐसा ही स्वरों का अनूठा संगम पेश करने जा रहे हैं हम, जहां भक्ति से देशभक्ति तक
और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, जिसने रंगीन जीवन के मस्ती भरे पलों को भी बटोरा है, तो अभिभावकों बेजू बावड़ा और तानसेन के देश के कलाकार विद्यार्थी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं लाइव ऑर्केस्ट्रा। तो प्रस्तुत है लाइव ऑर्केस्ट्रा।
अभिभावकों, जोरदार तालियों से हौसला बुलंद करें इन नन्हे मुन्ने कलाकारों का। गंगा भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है। गंगा विज्ञान की दृष्टि से भी गंगा जल वास्तव में जीवाणु मुक्त सिद्ध हो चुका है। गंगा की इसी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक सफल अभियान चलाए हैं, जिनमें नमामि गंगे जैसी अनेक योजनाएं हैं। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर कमंडल में उस अमृत जल का संग्रह कर लिया। जब भागीरथ ऋषि को अपने पूर्वजों का उद्धार अर्थात मोक्ष करने के लिए गंगा जी की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने गंगा जी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाने का संकल्प कर लिया और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव की मदद से गंगा जल को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाने में सफल रहे। ऋषि भागीरथ के प्रयत्न के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी श्रेष्ठ गंगा हमारे श्रेष्ठ भारत में ही हो सकती है, जिसे भागीरथ जैसे भारतीय श्रेष्ठ ऋषि ने स्वर्ग से उतारकर पृथ्वी पर ला दिया। तो चलिए साथियों, हम विनय करते हैं गंगा मैया की और बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर। गंगे चै यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। एक रिश्ता जो सनातन है, मां का है। एक महानदी जो हिमालय के हृदय से निकलती है, मां गंगा बन जाती है। भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम् भगवती तव तीरे नीरमात्रशनोऽहम् विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि विगतविषयतृष्णा कृष्णमाराधयामि सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवी गंगे प्रसीद 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 नमामि गंगे 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 नमामि गंगे। हर हर गंगे जय जय गंगे। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम
बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। के बाद नख से जन्म तेरा, ब्रह्मा का मंडल भवन है तेरा। शिव की जटा पे उतारी गई, भागीरथी तू पुकारी गई। सगरवंशी मुनिशाप से उनकी चिता जली, उनका तूने उद्धार किया, तेरी धारा ने उनको मोक्ष दिया। वाह, कितना महान है हमारा देश भारत, इसलिए तो श्रेष्ठ है भारत, जहाँ पर स्वर्ग की नदी गंगा भी उतर आई है। सुंदरतम प्रस्तुति अभिभावकों, जोरदार